Hello and welcome, comrades. Now, this is lecture 3 PYQ analysis of environment. And in this lecture, again, we will see few of the questions from previous years, and then we'll analyze the broader trends, the frameworks, so that once we understand the concept, we not only tackle the questions which have already come, but we would also be able to tackle any more questions that come under the peripheries of the given frameworks. Let's have a quick glance at what all types of questions have come and what all we are going to cover in this third part of the series. So the first question is on carbon dioxide. The next question is on marine upwelling, followed by global warming. Yet again, global warming to pre-industrial levels, thermal power plant gases, followed by steel industry, what all is released. Then again, carbon dioxide and carbon cycle. Algal blooms is also related to upwelling. Then ambient atmosphere, this is related to global warming. So the purpose of this video is first to see the concept of global warming, and the next concept that we would be seeing is ocean acidification and marine upwelling. Let's quickly begin with the concepts. Let's understand this, and then we'll move on to the questions and try solving them. So the first topic is global warming. What do you mean by global warming? So global warming is increase in the Earth's atmospheric temperature and increase in the temperature of the troposphere. So troposphere the first layer of the atmosphere है ना, उस लेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है, वो ग्लोबल वार्मिंग है. अब ऐसा नहीं है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जिस इम्पैक्ट से होता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. Natural process as such, it's such an important natural process that without this greenhouse phenomena, our earth would be suffering -19 degrees Celsius of temperature. मतलब इतनी cold temperatures that life would not have been possible on the planet. तो पहली बात तो ग्रीन हाउस जो फिनोमिना है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ट्रैप करते हैं हीट को, ताकि वो एस्केप ना करे आउटर स्पेस में और अर्थ वार्म रहे, प्लांट्स ग्रो करें, बायोडाइवर्सिटी एनरिच हो, और बहुत सारी चीज़ें जो ग्रोथ से रिलेटेड है, जो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हो सके प्लानट पे, उस पर ग्रीन हाउस फिनोमिना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. बट दिस बैलेंस अकर्स व्हेन मोर हीट इज़ ट्रैप्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस दैन इट शुड एक्चुअली डू. तो उससे फिर टेम्परेचर्स हीट हो जाती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, वाटर लेवल राइज हो जाता है. इट कैन लीड टू फ्लड, इट कैन लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सेवरल अदर इल इफेक्ट्स. नाउ ग्लोबल वार्मिंग में प्रोसेस क्या होता है? सी सिंपल प्रोसेस. सन्स रेज विल रीच द अर्थ. सन्स रेज आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन. शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन का हाई फ्रीक्वेंसी होता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, वो हिट करता है हमारे अर्थ को. फिर मोस्ट 30%, इट इज़ सेट कि 30% गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस, बाय द क्लाउड्स. वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आउटर स्पेस में चला जाता है. जो बचा हुआ 70% है वो अर्थ अपने आप में एब्जॉर्ब करता है. आफ्टर अब्जॉर्बिंग द अर्थ री एमिट्स इट, मतलब दोबारा उसको वो अपनी सरफेस से भेजता है, तब हीट्स अप एंड देन कूल्स डाउन. उसमें जो वो भेजता है रेडिएशन, अर्थ सेंड्स इंफ्रारेड रेडिएशंस विच आर लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन, जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होती है. Now these are the infrared radiations which are captured by the greenhouse gases to heat up the atmosphere. तो ग्रीन हाउस गैस ऐसा नहीं है कि सन की एनर्जी को ले रहे हैं, नहीं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ री एमिट कर रहा है उसको ले रहे हैं, दे अब्सॉर्ब इट एंड देन दे हीट द एटमॉस्फियर. तो वो कौन से गैसेज हैं? सबसे पहले इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो बास्केट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पे है, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, दैट्स अबाउट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. उन्होंने 6 बास्केट्स में 6 गैसेस का एक बास्केट बनाया है जो कि प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं. उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिनेटेड गैस के 3 सब टाइप्स हैं, पर फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ठीक है, ये तो क्योटो बास्केट है. उसके अलावा वाटर वेपर को भी माना जाता है ग्रीन हाउस गैस. उसके अलावा ब्लैक कार्बन को भी माना जाता है, ब्राउन कार्बन को भी माना जाता है. About sulfur dioxide, it is said that it is a greenhouse gas, but it's not a very primary greenhouse gas. वो भी है, indirectly है, वो secondary है greenhouse gas. It also causes warming of the atmosphere. So what are the sources? Water vapor,
practically found everywhere. Carbon dioxide, all combustion processes. Methane, any anaerobic decomposition, not aerobic. जहाँ पे ऑक्सीजन है कि वहाँ पे मीथेन का अगर डिकम्पोजिशन है एंड विथ ऑक्सीजन इन CH4 विच इज़ मीथेन विल नॉट बी रिलीज. बट एनऑर्बिक कंडीशंस में, मतलब विदाउट ऑक्सीजन के कंडीशंस में मीथेन इज़ रिलीज्ड. उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडिपिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एडिपिक एसिड. whenever any synthetic fiber is being produced like nylon or rayon, such type of synthetic fibers use adipic acid, and in that preparation nitrous oxide N2O is utilized. Fluorinated gases, perfluorocarbons, hydrofluorocarbons, sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride is present also in circuit breakers जो होते हैं as a leak gas. लीक इंडिकेटर की गैसेस का कुछ लीक हो रहा है तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड यूज़ होता है. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, यू नो, रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल, ओजोन डिप्लीशन भी इससे होता है. दे आर ऑल्सो ग्रीन हाउस पोटेंशियल गैसेस. ब्लैक कार्बन, कंबशन ऑफ डीजल. और ब्राउन कार्बन बोलते हैं ऑर्गेनिक एरोसॉल का पार्ट होता है. एरोसॉल आर दो सब्सटेंसेस विच आर ईदर लिक्विड और सॉलिड एंड दे आर सस्पेंडेड इन एन एयर का मटीरियल, इन अ गैशियस मटीरियल सच आर एरोसॉल्स. जैसे कि कोई स्प्रे हुआ तो उसमें लिक्विड मटीरियल है विद गैस, लिक्विड भी आता है ना, तो दैट्स एरोसॉल. एनी सच टाइप ऑफ मटीरियल इज एन एरोसॉल. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि इफ़ यू सी ऑन अ टाइम स्केल विच इज़ लाइक 100 years टाइम स्केल, एंड देन यू कंपेयर कि विच ऑफ द गैसेस कैन कॉज more global warming as compared to carbon dioxide, that measure is the global warming potential. So it is found कि fluorinated gases है, since they are heavy in mass, they can capture more heat, so they have the highest global warming potential in the longer run. After that, nitrous oxide has the highest potential, then CH4 has also the highest potential, and then CO2. ठीक है, ये इनका पोटेंशियल है. और ऑल्सो इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ये सारे गैसेस अलग अलग टाइम तक रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये 100 टाइम स्केल की बात हो रही है. नाउ दिस मार्क्स द एंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक. नाउ नेक्स्ट कम टू ओशन एसिडिफिकेशन. नाउ ओशन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन का प्राइमरी मतलब क्या होता है कि pH वैल्यू अगर कम हो गई किसी चीज़ की तो वो एसिडिक मीडियम बन गई. अब या तो एक कॉज हो सकता है कि एसिड रेन डायरेक्टली हो रही है, सो ओशन वाटर कैन गेट एसिडिफाइड. दूसरा रीज़न बोला जाता है यूट्रोफिकेशन को. यूट्रोफिकेशन क्या हुआ कि व्हेन द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड ऑन द फील्ड्स. अब वो वाटर ज़्यादा अगर फील्ड में होगा तो उसका रन ऑफ होगा, मतलब पानी के साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बह कर किसी भी वाटर सोर्स में जा सकते हैं. और नाइट्रोजन लीड्स टू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो अगर वो पानी में जाएगा तो पानी के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जिनको हम एल्गीज होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खुद बनाते हैं खाना, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको भी न्यूट्रिएंट मिलेगा नाइट्रोजन. तो उनकी एल्गल ब्लूम हो जाएगी, बहुत सारी नाइट्रोजन आ जाएगी उनके पास, उनका बहुत प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत सारा प्रोडक्शन हो जाएगा. दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विद देम, वो सक इन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. उसके बाद उनकी एक लाइफ स्पैन होती है. लाइफ स्पैन जब उनकी ख़त्म हो जाएगी देन दे विल डाई. आफ्टर डाइंग बैक्टीरिया विल डिकम्पोज इट. On any decomposition process, carbon dioxide is released. So what happens is that when they decompose, a large amount of carbon dioxide is released, the oxygen levels fall, and the carbonate level in the water also falls, because carbon dioxide reacts with water to give hydrogen carbonate, and hydrogen carbonate molecule H2CO3. in H2CO3 what happens कि वो ब्रेकअप जब होता है ना आयन्स में, तो हाइड्रोजन एक आयन और बाइकार्बोनेट का आयन आता है, और हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस होने से pH डिक्रीज़ करता है, तो एसिडिक हो गया मीडियम. और बाइकार्बोनेट रिलीज़ हुआ है, नॉट कार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा रिलीज़ होने से कार्बोनेट की जो मात्रा है वो हो जाती है कम. कार्बोनेट का क्या काम होता है कि कैल्सिफिकेशन, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स करते हैं, अपना कैल्सिफिकेशन करते हैं, जिससे परमानेंट स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर हो सकता है, वो कम हो जाता है. बिकॉज अगर कार्बोनेट नहीं प्रेजेंट होगा वाटर बॉडी में तो कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, और वो जितने भी कैल्सिफाइंग बॉडी हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में. तो ये दो प्रॉब्लम है, एक तो एसिडिक हो गया मीडियम, कार्बोनेट नहीं बना, कैल्सिफिकेशन नहीं हुआ, CO2 एक्सेस रिलीज़ हो गया. So number of problems are related to this process.
अब ये तो हमारी बात हो गई ओशन एसिडिफिकेशन की, नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स इट कैन हैव। फिर एक आता है मरीन अपवेलिंग, इसका भी थोड़ा सा रिलेशन कार्बोनेट से है। सो होता क्या है कि वार्म वाटर राइजेस अप एंड कोल्ड वाटर सिंक्स। तो जो डीप ओशन के वाटर हैं, दे आर डीप वाटर्स, कोल्ड वाटर्स, they do not have that much of carbonate. They are rich in carbon dioxide and nutrients, but they do not have carbonate with them, CO3 minus. Since they do not have carbonate, any sort of calcification cannot occur in very deep ocean because it gets dissolved over there. A calcification of organisms can only happen in the surface water. अगर warm water है तो वहाँ पे calcification होगा। तो upwelling में क्या होता है कि जो deep cold waters हैं, they come near the surface and get mixed with the warm waters. सो जो ऊपर में कार्बोनेट थी उसको वो डिप्लीट कर देते हैं, बिकॉज CO2 बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है। आगे algal bloom can happen, carbonate will decrease, there will be no calcification. So this can variously impact the organisms that are present. This is the concept of marine upwelling. Now we will see the questions related to it. उसके बाद हमें और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द रिसेंट पास्ट हैव कॉज्ड द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट अ लॉट ऑफ इट डज नॉट रिमेन इन द लोअर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, लेट्स सी द ऑप्शंस, इट्स एस्केप इनटू द आउटर स्पेस, ओके, द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशंस। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड वाला भले ही हमें फर्स्ट का चलिए डाउट है, बट सेकेंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जब फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं तो दे अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, नाउ दिस ऑल्सो हैपन्स। सो मोर देन इट्स एस्केपिंग इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर, बिकॉज एवरीवेयर इट्स बीइंग टेकन ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कुछ काम नहीं है तब वो एस्केप करेगी। सो 2 and 3 आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones are important as they increase marine productivity by bringing decomposer microorganisms to the surface, nutrients to surface, bottom dwelling organisms to the surface. See, the answer to this is, you understand, it's related to nutrients coming to the surface, because as I told you, marine upwelling में deep water जो होते हैं जिसमें CO2 ज़्यादा होता है, nutrients ज़्यादा होता है, वो ऊपर आती है. It has nothing to do with the decomposer microorganisms coming on the surface or bottom dwelling organisms coming to the surface. It has nutrients wala part. So 2 is the answer, 2 only. Now what are the question number 3, what are the possible limitations of India in mitigating the global warming at present and in immediate future? Appropriate alternate technologies are not sufficient at present. This is true. India cannot invest huge funds in research and development. Okay, this is also true. Many developed countries have already set up their polluting industries in India. Now this is not the reason why India may not be able to mitigate. So 1 and 2 are the appropriate answers. Number 4, scientific view is that increasing global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperatures increase beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be its possible impact or impacts? Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source, which means that instead of taking in carbon, they'll give out more carbon. Yeah, this is possible. Widespread coral mortality will occur. Yeah, this can also happen if temperatures will increase. Then coral, there will be problem. If CO2 levels increase, temperatures increase, coral mortality may increase. All the global wetlands will permanently disappear. We do not know if they permanently disappear or not. Cultivation of cereals will not be possible anywhere in the world. So 3 and 4, they are extreme statements. Answer is 1 and 2 only. Next question. Consider the following. Carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which are the emissions from coal combustion at thermal power plants? All the 3. Because usually industrial process many gases released. So important pollutants released by steel industry. There are 4 options and all of them are applicable because a lot of gases released whenever there is any industrial process. Next question. Which of the following add carbon dioxide to the carbon cycle? Volcanic action, yes. Respiration, yes. Photosynthesis, no, of course, because oxygen is released. Decay of organic matter, yes. Answer is 1, 2 and 4.
Next, there is a concern over the increase in harmful algal blooms in the seawater. What can be the causative factors? Discharge of nutrients from the estuaries? Yes. Runoff from the land during the monsoon? Yes. And upwelling in the sea? All the three are correct, because whenever nutrients will increase, there will be algal blooms. Phytoplankton, as I told you. Next question, consider the following which can be found in the ambient atmosphere. Ambient atmosphere means the atmosphere around us. So soot can be found, we all know. Water vapor is also present, and sulfur hexafluoride also is present, because as I told you, in leaks, as leak detection and all, it's not that it won't be present, it is present. It's a greenhouse gas. So 1, 2 and 3, all three are correct. This marks the end of our question discussion as well as concept discussion. And as always, we'll end this video with a thoughtful quote, and this is something by Max Muller, which he said about India, and I quote, "If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions, I should point to India." So that marks the end to the discussion. Thank you so much.